हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 14 सारा अक्षर स्टार्ट करेंगे। राइटर का नाम है पिंकी बहन पंड्या। हार्दिक, મેહુલ તું તો લેસન કરવા બેસી ગયો, ચલ ને રમવા, બધા જ તારી રાહ જુએ છે। हार्दिक ने क्या बोला कि मेहुल तू तो होमवर्क करने बैठ गया, चलने हम सब तेरी राह देख रहे हैं। मेहुल आ लेसन पूરું થઈ જાય એટલે शांति ने। फिर मेहुल ने क्या आंसर दिया कि ये होमवर्क खत्म हो जाए तो शांति हो जाएगी। हार्दिक, अरे वाह, तारी नोटना पाना केवा मस्त છે લીસા લીસા। हाँ, હવે મને ખબર પડી કે સાહેબ કાયમ તારી નોટ જ ક્લાસમાં કેમ બતાવતા હશે। फिर हार्दिक ने बोला कि अरे वाह, तेरी नोटबुक के पेज कितने मस्त हैं। अब पता चला कि सर क्लास में तेरी नोटबुक क्यों सबको दिखाते हैं। मेहुल, મારી નોટના લીસા પાના છે એટલે કંઈ સાહેબ ક્લાસમાં નથી બતાવતા, પણ મારા અક્ષર સારા છે એટલે નોટમાં હું છેકછાક નથી કરતો એટલે સાહેબ બધાને બતાવે છે। फिर मेहुल ने क्या आंसर दिया कि मेरी नोट के पेज अच्छे हैं इसलिए कि सर क्लास में नोटबुक नहीं दिखाते, लेकिन मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और बुक में मैं एक भी छिकछाक नहीं करता, इसलिए सर सबको दिखाते हैं। हार्दिक, हाँ पण લીસા અને સરસ પાના હોય તો અક્ષર સરસ જ આવે ને, લખવાની પણ મજા આવે। फिर हार्दिक ने क्या बोला कि पेज अच्छे हो तो फिर हैंडराइटिंग भी अच्छी ही हो तो लिखने की कितनी अच्छा लगेगा। मेहुल, લીસા પાના હોય એટલે अक्षर सरस आवे એવું न હોય। फिर मेहुल ने क्या आंसर दिया कि पेज है वो सपाट हो तो इसलिए हैंडराइटिंग अच्छी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सोनल, अरे हार्दिक, तने आ मेहुल ने बोलाववा मोकल्यो અને તું જ અહીંયા બેસી પડ્યો। બધા ભીલું પણ નક્કી થઈ ગયા, બધા તમારી વાટ જુએ છે। फिर सोनल ने क्या बोला, अरे हार्दिक, मैंने तुझे मेहुल को बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन तुम भी यहाँ पे बैठ गए। मेहुल, જોને સોનુ, તું જ કહે એને, आ मारी बात समझतो नहीं। सोनल, केम शू थयु। फिर मेहुल ने क्या बोला कि सोनू देखना, ये मेरी बात समझता नहीं है। फिर सोनल ने क्या पूछा, क्यों, क्या हुआ। मेहुल, ए मने कहे छे कि मारी नोटना पाना લીસા છે એટલે મારા અક્ષર સરસ આવે છે, એવું તે કંઈ હોતું હશે। फिर मेहुल ने क्या बोला कि ये मुझे बोल रहा है कि मेरी नोटबुक के पेज अच्छे हैं इसलिए मेरी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, ऐसा कभी होता है। सोनल, ना यार, એવું તો ના હોય, જો કે મારા પપ્પા મારા માટે મોંઘી મોંઘી नोट क्या लावे छे। फिर सोनल ने क्या बोला कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता, मेरे पापा है वो कहाँ से मेरे लिए महंगी महंगी नोटबुक लाते हैं। हार्दिक, मारा पप्पा तो हूँ कहूँ छू तोय नहीं लावता। फिर हार्दिक ने क्या बोला कि मैं अपने पापा से बोलता हूँ लेकिन वो नहीं लाते। राधा, एवी बधी तो पप्पा ने खबर पड़े ज ने, जे आपणा कामनु होय ए मोंघू होय तो पण लावे अने कामनु ना होय तो पण लावे, एमां शू। फिर राधा ने क्या बोला कि ये सब अपने पापा को तो पता होगा ही, क्योंकि जो अपने काम का है वो महंगा होगा तो भी वो लाएंगे और काम का नहीं है तो फिर वो नहीं लाएंगे, इसमें क्या है। हार्दिक, पर एटले तो मारा अक्षर सारा नहीं आवता। फिर हार्दिक ने क्या बोला, इसलिए तो मेरे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती। सोनल, એવું કશું नहीं, मारा अक्षर तो गमे तेना पर लखूँ पण सरस ज आवे। फिर सोनल ने क्या बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहीं पे भी लिखूँ लेकिन मेरी हैंडराइटिंग अच्छी ही होती है। राधा, ये तो तू अणीवारी पेंसिल लखे छे ने एना लीधे। फिर राधा ने क्या बोला, ये तो तू धारदार पेंसिल से लिखती है ना इसलिए। अशरफ, एम ज तो तू आखो दिवस पेंसिल छोल छोल करती होय। अशरफ ने क्या बोला कि तू इसलिए ही पूरा दिन पेंसिल शार्पनर करती रहती है। हार्दिक ने 2 दिवस एक पेंसिल पूरी करे छे। फिर हार्दिक ने क्या बोला कि 2 दिन में एक पेंसिल खत्म कर देती है। सोनल, ये तो अणी टूटी जाए तो छोलवी ज पड़े ने, अने पेंसिल ज बटकनी होय तो हूँ शू करूँ। फिर सोनल ने क्या बोला कि उसमें जो अणी है वो टूट जाती है तो फिर पेंसिल शार्पनर तो करनी ही पड़ती है ना, क्योंकि पेंसिल कच्ची है इसलिए। राधा,
संचा थी छोले छे એટલે કદાચ टूटी जती हसे, ब्लेड थी छोलीश तो नहीं टूटे। फिर राधा ने क्या बोला कि तू शार्पनर से करती है इसलिए पेंसिल टूट जाती है, लेकिन ब्लेड से करेगी तो वो पेंसिल नहीं टूटेगी। धवल पर ब्लेड थी छोलवा जता पेंसिल ने बदले आंगળી छोलाई जाए तो? फिर धवल ने क्या बोला कि लेकिन ब्लेड से हम पेंसिल की अणी निकालेंगे तो अपनी उंगली में ही चोट लग जाए तो? अशरफ मारी पासे तो एवी ब्लेड छे कि अणी भमकदार छे पण जराए वागी नहीं। फिर अशरफ ने क्या बोला कि मेरे पास तो ऐसी ब्लेड है जिसकी अणी है लेकिन वो जरा भी लगती नहीं है। राधा पर तारा पप्पा तो कहता था तारा अक्षर बहुत गंदा छे। फिर राधा ने बोला लेकिन तेरे पापा बोल रहे थे कि तेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। अशरफ अबू तो एम ज कहे कि कलम थी लखीए तो ज अक्षर सारा आवे। फिर अशरफ ने क्या बोला कि उसके पापा क्या बोलते थे, जो हम कलम से लिखे तो ही हमारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी। मेहुल आ कलम वड़ी शू छे? फिर मेहुल ने क्या बोला कि ये कलम क्या है? अशरफ एक जातनी पेन ज कहेवाय, बरू आवे कशाकथी पेंसिल जेटली लाकड़ीने आंगळीथी तीरछी छोलीने एनाथी लखवानुं। कलम क्या है? वो एक जात की पेन ही है, लाकड़ानी तो कहीं ना लखाए। फिर राधा ने क्या बोला कि लकड़ी से थोड़ी ना लिखा जाता है। धवल एमा स्याही के रिफिल केवी रीते भराय? फिर धवल ने बोला कि उसमें स्याही या रिफिल किस तरह से भरी जाती है। अशरफ कलम में रिफिल ना नखाए अने एमा स्याही पण नहीं भरवानी। फिर अशरफ ने क्या बोला कि उसमें कलम में हम रिफिल भी नहीं डाल सकते और स्याही भी नहीं भर सकते हैं। धवल और हार्दिक तो पची तो फिर धवल ने हार्दिक क्या पूछे तो फिर कैसे लिखेंगे? अशरफ कलम ने दवातमा एटले के खड़िया में बोलवानी अने एनाथी लखवानुं। कलम से लिखने के लिए उसका ये खड़िया आता है, उसमें डाल के उसमें अंदर डाल के फिर बाहर निकाल के फिर उसे लिखा जाता है। हार्दिक तो वारे घड़ी खड़िया में बोळ्या ज करवू पड़े। अशरफ हसतो पण एनाथी लिखाई बहुत सरस आवे। फिर हार्दिक ने क्या बोला तो फिर हमें बार बार उसमें बोल के फिर लिखना पड़ेगा। तो फिर अशरफ ने क्या बोला कि हाँ उससे बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग होती है। धवल एना करता अपनी बॉलपेन सारी नहीं? अणी छोलवानी चिंता, शाही भरवानी माथाकूट के ना हाथ गंदा थाय, रिफिल खलास थाय एटले बदली काढवानी बस। फिर धवल ने क्या बोला कि इससे अच्छा तो अपनी बॉलपेन है, कि नहीं उसमें शार्पनर करने की चिंता, नहीं स्याही भरने की माथाकूट, नहीं हाथ गंदे होते हैं, बस रिफिल ख़त्म हो तो बॉलपेन में रिफिल बदल डालने की। सोनल पर एनाथी अक्षर गंदा आवे। फिर सोनल ने क्या बोला लेकिन उससे हैंडराइटिंग बहुत ही खराब आती है। मेहुल मारा अक्षर तो बॉलपेन थी लखूँ तो पण सारा आवे छे। फिर मेहुल ने क्या बोला कि मैं बॉलपेन से लिखता हूँ तो भी मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आती है। हार्दिक तारा अक्षर तो आम पर सरस छे, हूँ तो पेंसिल थी लखूँ के बॉलपेन थी, अक्षर सारा आवता ज नथी। फिर हार्दिक ने क्या बोला कि तेरी हैंडराइटिंग तो वैसे भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं पेंसिल से लिखूं या बॉल पेन से लिखूं मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है। राधा एनो अर्थ ए ज छे कि पेन पेंसिल बॉलपेन जे फावतुं होय एनाथी लखवानुं। अक्षर सारा होय तो गमे एनाथी लखो, अक्षर सारा ज आवे अने खराब अक्षर होय तो खराब। फिर राधा ने क्या बोला कि इसका यही मीनिंग है कि हम पेन पेंसिल बॉलपेन जो भी हमें अच्छा लगता है उससे हम लिखेंगे, लेकिन हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो किसी से भी अच्छी ही आएगी, लेकिन जो हमारी हैंडराइटिंग खराब होगी तो हम कोई भी पेन बॉल पेन या पेंसिल से लिखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग खराब ही आएगी। हार्दिक पर खराब अक्षर ने लीधे कितनी तकलीफ थाय छे। फिर हार्दिक ने क्या बोला कि हैंडराइटिंग जो खराब हो तो उससे कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। धवल केम? फिर धवल ने पूछा कैसे? हार्दिक मारा साहेब कहता हता कि मारा अक्षर खराब छे एटले मारा मार्क्स कपाई जाए छे, हूँ शू लखूँ छूँ तेज तेमने खबर नहीं पड़ती। फिर हार्दिक ने क्या बोला कि मेरे सर बोल रहे थे कि तेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है इसलिए तेरी मार्क्स है वो कट हो जाते हैं। मैं क्या लिखता हूँ वो सर को पता ही नहीं चलता। राधा अरे एना लीधे तो केवी गड़बड़ थई होय छे। मारा मम्मी बहार गाम गया त्यारे मारा फोईए मारी मोटी बहने कागळ लख्યું, માટલું બરાબર સાફ કરજો, ઓટલો બરાબર વાળજો અને અમને
એવું વંચાયું, ચાટલું બરાબર સાફ કરજો ને ચોટલો બરાબર વાળજો. તે મારી બહેન તો બિચારી રોજ રોજ દરેક ચાટલા સાફ કર્યા કરે અને ટૂંકા વાળમાં ચોટલો वाड़वानी कोशिश કર્યા करे। बेचारी एवी कंटाड़ी गई कि बात नहीं। फिर राधा ने क्या बोला कि एक बार तो इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि मेरी मम्मी है वो बाहर गई थी और वहाँ से मेरी बुआ ने मेरी बड़ी बहन को लेटर लिखा था और उसमें लिखा था कि માટલું बराबर साफ करजो ने ओटलो बराबर वाड़जो। उसमें लिखा था हमारे घर का जो मटका होता है वो बराबर अच्छे से साफ करना और बाहर का जो होता है आंगन वो बराबर झाड़ू से साफ करना। और उसकी मेरी बुआ की हैंड राइटिंग खराब होने के कारण हम लोगों ने क्या रीडिंग किया, चाटलू बराबर साफ करजो और चोटलो बराबर वाड़जो। तो उसमें क्या लिखा था, માટલું बराबर साफ करजो और ओटलो बराबर वाड़जो, लेकिन यहाँ पे रीडिंग किया तो उसका उल्टा ही हो गया। तो फिर मेरी जो बड़ी बहन थी वो रोज रोज चाटला साफ करती रहती थी एंड मेरे छोटे से बाल है लेकिन उसमें से अच्छे से चोटी करने की कोशिश करती रहती थी। वो बेचारी बहुत प्रॉब्लम में आ गई थी। अशरफ, खबर पड़ी त्यारे बहु हस्या हशो नहीं? राधा, हास तो पण कोई बार ओढ़नु चोड़ वेतराई जाए तो? फिर अशरफ ने बोला कि तुम लोगों को पता चला होगा तब तुम लोग बहुत ही हंसे होंगे। तो फिर राधा ने क्या बोला कि हाँ, और कोई बार ओढ़ का चोड़ हो जाता है तो क्या होगा? हार्दिक, मैं एक बार सांभळ्युं हतुं कि एक जणे गामडे कागळमां लख्युं कि ढोरने बराबर चारजो अने त्यां एवुं वंचायुं कि ढोरने बराबर मारजो। ते एमां बिचारो ढोर मार खाई खाई ने अधमुआ थई गया। फिर हार्दिक ने क्या बोला कि मैंने एक बार सुना था, एक गांव में लेटर लिखा था कि ढोर ने बराबर चारजो, कि हमारे घर पे जो होते हैं गाय भैंस उनको बराबर खाना खिलाना। लेकिन वहाँ पे क्या पड़ा कि ढोर ने बराबर मारजो, लेकिन वहाँ पे क्या है कि पशु को ठीक से मारना। तो बेचारे पशु है वो मार खा खा के अधमुए हो गए थे। मेहुल, એટલા માટે તો ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે ખરાબ અક્ષરો એ અધૂરી કેળવણીની નિશાની છે। फिर मेहुल ने क्या बोला कि इसलिए तो गांधी जी ने बोला है कि खराब अक्षर है मीन्स खराब हैंड राइटिंग है वो अधूरी केळवणी की निशानी है। हार्दिक, पर गंदा अक्षर सुधारवा होय तो शू करवू? फिर हार्दिक ने क्या बोला कि खराब हैंड राइटिंग है वो अच्छी करनी है तो हम क्या करेंगे? सोनल, मारा दादी एवं कहता कि सवारे वहेला उठीने ठंडा पानी में हाथ नाखी देवाना होय अने हाथ ठरी जाए पछी एवा हाथे धीमे धीमे सरस रीते लखवानुं। फिर सोनल ने क्या बोला कि मेरी दादी ऐसे बोलते थे कि सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी में हाथ डाल देना, फिर उससे धीरे धीरे से लिखना। राधा, मारा दादा एवं कहता कि एमना जमाना में पाटली पर भीनी माटी पाथरीने सरस वणाकवाळा अक्षर लखीने माटीने सुकावा देता अने पछी ए अक्षरनी अंदर लख्या करवानुं। पण हवे आजना जमाना में कोण आवुं बधुं करे? फिर राधा ने क्या बोला कि मेरे दादा ने बोला कि हमारे जमाने में पाटली थी, उसमें गीली मिट्टी से सरस अच्छे से लिख देते थे, फिर उसके अंदर वो लिखते थे, इससे हैंड राइटिंग अच्छी होती। लेकिन इस जमाने में ऐसा कौन करेगा? धवल, पण आपणे नाना हता ने सुलेमाननी नोट में लखता हता एवी रीते तो लखाय ने। फिर धवल ने क्या बोला कि हम लोग छोटे थे तब सुलेमान की नोट में लिखते थे, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। अशरफ, मारो भाई नानो हतो त्यारे मारा अब्बुए बहु चित्रों दोरावेला, कदाच एनाथी अक्षरना वणाक सरस थता हशे। तू पण वर्तुळ अर्धवर्तुळवाळा ऊभी आडी त्रासी લીટીવાળા चित्र દોરીને जो ने। फिर अशरफ ने क्या बोला कि मेरा भाई जब छोटा था तब मेरे पापा ने उससे बहुत ही पिक्चर ड्रॉ करवाई थी, कदाच इससे अक्षर के जो वणाक है वो अच्छे से हो, जैसे कि वर्तुळ अर्धवर्तुळ ये सब लाइन वो सब ड्रॉ करके देख। हार्दिक, अरे हूँ तो एकड़िया बगड़ियानी जेम अक्षर घूंटवा पण तैयार छूँ, कंईक तो करवू ज पड़शे ने। गंदा अक्षरनी तो मने बहु शरम आवे छे। फिर हार्दिक ने क्या बोला कि मैं तो 1 और 2 भी
ऊपर घूटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेरी खराब हैंडराइटिंग के कारण मुझे बहुत ही शर्म आती है। મેહુલ: धीरज રાખીને सतत प्रयत्न करीश तो चौक्कस सफल थईश। फिर मेहुल ने क्या बोला कि धीरज रख के और तुम प्रयत्न करोगे तो तुम अच्छी हैंडराइटिंग लिख सकोगे। सोनल: હવે વાતોના વડા જ કરવા છે કે રમવાનું જવું છે? फिर सोनल ने क्या बोला कि अब बातें ही करनी है कि खेलने भी जाना है। મેહુલ, हार्दिक, राधा, धवल, अशरफ: हाँ ચાલો ચાલો जल्दी करो પછી અંધારું થઈ જશે। फिर वो सब खेलने गए। शब्द समझूती। લેસન: ગૃહ કાર્ય, ચલને, ચાલને, છેકછાક, જ્યાં ત્યાં લીટા, જ્યાં લખાણ બરાબર ન લાગે ત્યાં તેના ઉપર લીટો તાણવો અથવા ચેકો મૂકવો તે। બટકણી: સહેલાથી તૂટી જાય તેવી, બ્લેડ: લોખંડની ધારદાર પતરી, ભમકદાર, ભપકાદાર, સારી મજાની, ધારદાર, તીછરી, ત્રાંસી, રિફિલ: બોલપેનમાં મૂકવાની શાહીવાળી પાતળી નળી, દવાત: ખડીયો, શાહી ભરવાનું સાધન, બોલપેન: રિફિલની ચાલતી લખવા માટે પેન, માર્ક્સ કપાઈ જાય, ગુણ ઓછા મળે છે, ચાટલું: દર્પણ, અરીસો, અધમુઆ, અડધા મરેલા, શક્તિહીન, સુલેખન: સ્વચ્છ સુંદર લખાણ। રૂઢિપ્રયોગ: ઓડનું ચોડ થવું, ધારણા કરતાં સાવ ઊંધું થવું, એકડિયા બગડાની જેમ, શિખાઉની જેમ, વાતોના વડા કરવા, નકામી લાંબી વાતો કરવી। અભ્યાસ: નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલ બોક્સમાં લખો। 1. મેહુલની નોટ સાહેબ વર્ગમાં બધા બાળકોને બતાવે છે કારણ કે નોટના પાના લીસા હતા। તે કાયમ નિયમિત લેસન કરે છે। તેના અક્ષરો વાત बतावा માંગે છે। તેણે હોમવર્ક સરસ કર્યું હતું। तो इसका राइट आंसर क्या है? तेना अक्षरों बात बतावा मांगे छे। 2. अक्षरों सारा काढवा होय तो क. मन शांत राखवू, ख. कलमथी ज लखवू, घ. नवी बोलपेननी जरूर पड़े, घ. लखवानो वारंवार महावरो करवो पड़े। तो राइट आंसर क्या है? लखवानो वारंवार महावरो करवो पड़े। 3. तमे पहला धोरण में भणता त्यारे साहेब आडी ऊभी ત્રાસી લીટી દોરાવતા કારણ કે લખવાનો મહાવરો થાય, અક્ષરોનો વળાંક સુધરે, ચિત્ર દોરતા આવડે કે આનંદ પડે। तो राइट आंसर क्या है? अक्षरों वळांक सुधरे। નીચેના દરેક પ્રશ્નોનો એક એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો। 2. 1. સાહેબ બધાને મેહુલની નોટ બતાવે છે તે બાબતે હાર્દિક શું માને છે? સાહેબ બધાને મેહુલની નોટ બતાવે છે તે બાબતે હાર્દિક માને છે કે તેની નોટના પાના લીસા અને સરસ છે। 2. ચારજોને બદલે કયો શબ્દ વંચાયો? ચારજોને બદલે મારજો શબ્દ વંચાયો। 3. સોનલના પપ્પા તેને કેવી નોટ લાવી આપે છે? સોનલના પપ્પા તેને માટે સસ્તી નોટ લાવી આપે છે। 4. અશરફ કલમને શેમાં બોળવાનું કહે છે? અશરફ કમલને સાઈના ખોડિયામાં બોળવાનું કહે છે। 3. નીચેના પ્રશ્નનો ઉત્તર 1-2 વાક્યમાં આપો। 1. ઓઢનું ચોડ વેતરાઈ જવું એટલે શું? ઓઢનું ચોડ વેતરાઈ જવું એટલે વિચિત્ર કે કંઈક બદલે કંઈક થઈ જવું। 2. સોનલના દાદીમાએ અક્ષર સુધારવા માટે શી સલાહ આપી? સોનલના દાદીમાએ અક્ષર સુધારવા માટે એ સલાહ આપી હતી કે સવારે વહેલા ઉઠીને ઠંડા પાણીમાં હાથ નાખી દેવા અને હાથ ઠરી જાય પછી એવા હાથે ધીમે ધીમે સરસ રીતે લખવાનું। સ્વાધ્યાય: નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો। 1. બધા બાળકો મેહુલની નોટ કેમ જોતા હતા? મેહુલના અક્ષર સારા હતા અને તે લખતી વખતે છેકછાક નહોતો કરતો એટલા માટે બધા બાળકો મેહુલની નોટ જોતા હતા। 2. સોનલના અક્ષર સારા આવે છે તેનું કયું કારણ રાધા આપે છે? સોનલના સારા અક્ષર આવે છે તેનું કારણ આપતા રાધા કહે છે કે સોનલ અણીવાળી પેન્સિલથી લખે છે એટલે એના અક્ષર સારા આવે છે। 3. ગાંધીજીએ અક્ષરો વિશે શું કહ્યું છે? ગાંધીજીએ અક્ષરો વિશે કહ્યું છે કે ખરાબ અક્ષરો એ અધૂરી કેળવણીની નિશાની છે। 4. કલમથી કેવી રીતે લખાય છે? કલમને દવાત શાહીના ખડિયામાં બોળીને લખાય છે। 5. ધવલને કલમના બદલે બોલપેનથી લખવાના કયા ફાયદા બતાવ્યા છે? ધવલે કલમના બદલે બોલપેનથી લખવાના આ ફાયદા બતાવ્યા છે। પેન્સિલની માફક અણી છોલવાની ચિંતા નહીં, ઇન્ની પેનની માફક શાહી ભરવાની
કડાકૂટ નહીં, હાથ ગંદા થવાનો કોઈ ડર નહીં અને રિફિલ ખલાસ થાય એટલે નવી બદલી નાખવાની. 6. ખરાબ અક્ષરને લીધે થતે ઘોટાળા માટે લેખિકાએ કયા કયા ઉદાહરણ આપ્યા છે? નીચેના ઉદાહરણ આપ્યા છે. એક વખત રાધાની મમ્મી બહાર ગામ ગઈ ત્યારે રાધાની ફોઈએ તેના મોટી બહેનને કાગળમાં લખ્યું, માટલું બરાબર સાફ કરજો, ઓટલો બરાબર વાળજો. ત્યારે ખરાબ અક્ષરને લીધે બધાને એવું વંચાયું કે ચોટલું બરાબર સાફ કરજો અને ચોટલો બરાબર વાળજો. આથી રાધાની બહેન રોજે રોજ ચાટલા અરીસા સાફ કર્યા કરતી અને પોતાના ટૂંકા વાળમાં ચોટલો વાળવાની કોશિશ કર્યા કરતી. આમ કરવાથી એ કંટાળી ગઈ અને થાકીને લોથપોથ થઈ ગઈ. એક માણસ ગામડે કાગળમાં લખ્યું કે ઢોરને બરાબર ચારજો. ખરાબ અક્ષરના કારણે ત્યાં એવું વંચાયું કે ઢોરને બરાબર મારજો. આને લીધે બિચારા ઢોર માર ખાઈ ખાઈને અધમુઆ થઈ ગયા. 2. અક્ષરો સુધારવા માટે કોણ કઈ રીત બતાવે છે તે લખો. સોનલ. સવારમાં વહેલા ઉઠીને ઠંડા પાણીમાં હાથ નાખી દેવા અને હાથ ઠરી જાય પછી એવા હાથે ધીમે ધીમે સરસ રીતે લખવું. 2. ધવલ. સુલેખનની નોટમાં લખવાથી અક્ષર સુધરી જાય છે. 3. રાધા. પાટલી પર ભીની માટી પાથરવી પછી સરસ વળાંકવાળા અક્ષર લખીને માટી સુકાવા દેવી. એ અક્ષરની અંદર લખ્યા કરવાથી અક્ષર સુધરી જાય છે. 4. અશરફ. વર્તુળ, અર્ધવર્તુળવાળા તથા ઊભી આડી ત્રાસી લીટીવાળા ચિત્રો દોરવાથી વળાંકવાળા સુંદર અક્ષર આવે છે. 3. નીચેના ગત સૂક્તિઓ વિચાર વિસ્તાર કરો. ખરાબ અક્ષરો કે અધૂરી કેળવણીની નિશાની છે. ખરાબ અક્ષરો એ અધૂરી કેળવણીની નિશાની છે. કેળવણી શબ્દ કેળવવું પરથી બન્યો છે. કેળવવું એટલે કુટેવો, સુધારીને ટેવો પાડવી. કેળવણી એ એક પ્રકારની તાલીમ છે. ભાષાના વાંચન, સુખપાઠ કે શુદ્ધ લેખન આવે છે. આ ત્રણેય બાબત સારી રીતે શીખી લીધા પછી વિદ્યાર્થીને સુલેખન પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. સુલેખન નોંધપોથીમાં અક્ષરો સારી રીતે ઘૂંટી તથા ચિત્રકળા શીખી તો અક્ષર મરોડદાર અને મોતીના દાણા જેવા આવે છે. સારા અક્ષર લખવું એ પણ એક કેળવણીનો જ ભાગ છે. ખરાબ અક્ષરને કારણે ઘણા ઘોટાળા સર્જાય છે. અક્ષર એ માણસના વ્યક્તિત્વની આરસી છે. એટલા માટે જ ગાંધીજીએ કહ્યું કે ખરાબ અક્ષરો એ અધૂરી કેળવણીની નિશાની છે. માટે વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં સારા અક્ષરે લખવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. 4. નીચેના રૂઢિપ્રયોગોનો અર્થ આપી વાક્ય બનાવો. 1. વાતોના વડા કરવા. વાતોના વડા કરવા, નકામી લાંબી વાતો કરવી. કેટલાક કામધંધા વગરના માણસો નવરા બેઠે બેઠે વાતોના વડા કર્યા કરે છે. 2. ઓળનું ચોળ વેતરાઈ જવું. વિચિત્ર કે કંઈક બદલે કંઈક થઈ જવું. આંધળા અને બહેરા સામસામા મળે ત્યારે એકની વાતચીતમાં ઓળનું ચોળ વેતરાઈ જાય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 4B. નીચેના શબ્દોનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો. લીસા, ખળબચડું. અણીદાર, બુટ્ટી. મોંઘું, સસ્તું, સોંઘું. ધીરજ, અધીરાઈ. 5. સૂચના પ્રમાણે કરો. આ પાઠમાં વપરાયેલ 5 અંગ્રેજી શબ્દ શોધીને લખો. ગ્લાસ, પેપર, પેન, પેન્સિલ, રિફિલ. તમે શોધેલા શબ્દો સાથે અનુબંધ ધરાવતા બીજા શબ્દ લખો. લેસન, નોટબુક. ક્લાસ, ટીચર. પેપર, નોટ. પેન, અક્ષર. પેન્સિલ, રબર. રિફિલ, બોલપેન. આ બંને શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. ક્લાસમાં ટીચર ભણાવે છે. છોકરા પેપર અને નોટ લઈને બેઠા છે. સૌ પેનથી સુંદર અક્ષર લખે છે. પાસે પેન્સિલ અને રબર પડ્યા છે. કોઈની પાસે બોલપેન કે રિફિલ નથી. અનુબંધ ધરાવતા શબ્દો તમે કયા આધારે લખ્યા, તમે વાક્યો કેવી રીતે બનાવી શક્યા, વર્ગમાં ચર્ચા કરો. આ પાઠમાં તમને કોનું પાત્ર સૌથી વધારે ગમ્યું? શા માટે? આ પાઠમાં મને રાધાનું પાત્ર સૌથી વધારે ગમ્યું કારણ કે રાધા વિચારશીલ છે, સ્વસ્થતાથી વિચારે છે. મિત્રો સાથેની વાતચીતમાં એની સમજદાર તેમજ સૂઝ જણાવી આવે છે. થેન્ક યુ.